अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब आपको अपडेट करें कि कजाकिस्तान के सफीर यजदान करस्ताफिन के एक्सपो सेंटर आमद। एक्सपो सेंटर में जारी एजुकेशन एक्सपो का दौरा किया। सफीर की कजाकिस्तान में तालीमी मौक़ों की आगाही फराहम करने वाले स्टॉल्स में दिलचस्पी का इजहार। कहा कि कजाकिस्तान में पाकिस्तानी तलबा के लिए बेहतरीन तालीमी मौक़े मौजूद हैं। मजीद उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। For arranging participation of my country at this very important exhibition. I would say that education is a very important area for developing our cooperation. This year, last year, we've been developing direct interaction between our universities. And as you might know, from the 8th of July, we launched direct flights from Lahore to Almaty. It's only 2.5 hours away. And we want to invite Pakistani youth to come to Kazakhstan and to study at our universities. It seems to me that this is another very important area that we should be focused on. And this year we are planning to organize a visit of the leading universities of Pakistan, such as Qaid-Azam, Namal, NAS, University of Punjab, University of Karachi, so on and so forth, to visit our country, to develop direct interaction with our universities, with the main purpose to establish exchange of students, exchange of faculty members, so on and so forth. So it seems to me that this year will be a breakthrough. I would say that in fact we already have Kazakh students studying at Pakistani universities. So I would like to invite our youth as well to explore opportunities for studying in Pakistan. You have so many beautiful universities, excellent universities. So this is why I'm saying that it's a very promising area for developing our cooperation. Yes, sure, of course. There are a lot of opportunities. The thing is that our peoples know little about each other. So we need to raise awareness, including our young generations, about the opportunities that we have in our both countries. So we will be developing these issues and we will be focusing especially on young generations because it's well known that Pakistan is one of the youngest nations in the world. So that's why our focus will be on youngsters. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जंग ग्रुप का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी एक्सीलेंट किस्म की एग्जीबिशन इन्होंने अरेंज की है। जैसा कि आज कजाकिस्तान के एम्बेसडर मिस्टर यजदान क्रिस्टोफन यहाँ पे मौजूद हैं इस स्टॉल पे, जो कि ब्रेनीज ने ऑर्गेनाइज़ किया है यहाँ पे। और मैं समझता हूँ कि कजाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ का लेवल इतना हाई है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, स्पेशली मेडिकल के स्टूडेंट्स को, उनके लिए एक बहुत बड़ा चांस है और बड़ी इकोनॉमिकल प्राइस में, बड़े कम कीमत पे और डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज़ के साथ ये एक कंपनी ब्रेनीज है जिसके के डॉक्टर अला बख्श साहब एक नहायत ही एक्सपीरियंस और तजर्बाकार इनके चीफ एग्जेक्टिव हैं। ब्रेनीज कॉन्सेप्ट के एक्स फेडरल सेक्रेटरी हैं, एजुकेशन और हेल्थ के बहुत तजर्बेकार हैं और ये आपको ब्रेनीज के बारे में। Thank you so much. First of all, I would like to respond to the question for the disabled people. We are going to promote exclusive and inclusive education. That means that for deserving candidates and for disabled or less able people, we'll specify a quota so that they get equal opportunity and affordable quality education in Kazakhstan. Kazakhstan has one of the finest universities in the world, and they have then linkages with the other universities in British and American universities. I think it will be a win-win situation that will be accessing the top universities in Kazakhstan and developing linkages with the rest of the world. The education, affordable education, will empower our people, and in near future they are going to be the people who will lead the nation. So this collaboration between Kazakhstan and Pakistan, the two brotherly Muslim countries, and the promotion of education will be a hallmark of achievement, and we are grateful to His Excellency for his visit. This demonstrates his personal interest and his passion to promote the education, and we are grateful to him. Berenice is going to take it forward, and it will be a joint leap in a near future. सबसे पहले तो जंग ग्रुप को मुबारकबाद देता हूं कि जिन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया और लोगों के लिए वन विंडो ऑपरेशन कहते हैं, एक छत के तले इतनी बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी को इकट्ठा किया। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो इसमें हर यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट स्कॉलरशिप्स दे रही है, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप दे रही है, नीडी स्कॉलरशिप दे रही है। स्पेशली राशिद लतीफ़ खान यूनिवर्सिटी जो है वो मेरिट बेस्ड भी देती है, नीडी स्कॉलरशिप भी देती है, किनशिप बुनियाद पे भी हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं। देखिए
یہ السلام علیکم. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہاں پہ جو اتنے لوگوں نے یہاں پہ اسٹال لگایا ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ لوگ آئیں اور اویئرنیس لیں کہ وہ کس ڈپارٹمنٹ میں اور کس چیز کو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں. تو یہ بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز نے اپنے ڈپارٹمنٹ کو ریپرزینٹ کیا ہے, تاکہ ان کو انفارمیشن آئے کہ ابھی ٹرینڈس کیا چل رہے ہیں, کرنٹ ٹرینڈس کیا چل رہے ہیں, کیا ایجوکیشن جو ہے وہ پرووائڈ کی جا رہی ہے, کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں. اس میں ہماری یونیورسٹی نے بھی بڑا اچھا اسٹال لگایا ہے. ہمارے بھی ابھی ریسنٹلی اپروو ہوئی ہے, HEC اپرووڈ یونیورسٹی ہے ہماری, اور اس میں سارے آلموسٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, لا ہے, فارمیسی ہے, بزنس ہے, تاکہ اسٹوڈنٹس آئیں اور دیکھیں کہ ہمارے لیے کیا. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہنور نیوز.